हालांकि ये क्रिश्चियन है लेकिन फिर भी इन्होंने मुस्लिम की किताब है हमारी, तो इन्होंने इसलिए सबसे ऊपर आउट ऑफ रिस्पेक्ट रखी हुई है। Going to school full time and being the constable, having to come to the office and do all the work as the constable, and then go to school for 2.5 years to complete the law school. In Texas के अंदर constables are very, very powerful. हम सबसे ऊपर होते हैं ना शेरिफ के साथ. Anybody, president को भी रोक सकते हैं. तो अगर मैं भी तोड़ता हूँ, and I might stop and stop. These are the magazines for my gun. This is my Glock 22. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में आपको पुलिस कांस्टेबल के ऑफिस का जो है वो टूर करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अमेरिका के अंदर कांस्टेबल का जो है वो रैंक क्या होता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, फाइनली इस टाइम के ऊपर जो है मैं कांस्टेबल प्रीसेंट 3 के अंदर जो है ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और फाइनली मेरी जो है नबील शाइक से जो है इस टाइम मीटिंग है। तो अभी चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? लोग चीफ के ऑफिस के अंदर हम लोग इंटर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये आप देखें, ये बाहर, ठीक है, ये चीफ का ऑफिस है, जिमी नाम है इनका। और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, ये आप देखें। हेलो, हाउ आर यू? Fine, how are you? गुड, To be here. थैंक यू। तो अभी यहाँ पर ये आप ये देखें, ये इनके सब अवार्ड्स वगैरह जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं गाइड कीजिएगा कि ये किस चीज़ के अवार्ड्स यहाँ पे जो है वो रखे हुए हैं। और ये येलो कलर का ये क्या चीज़ है? ये हमारे डेप्यूटी चीफ जिमी एवंस का है। ये FBI नेशनल एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएट किया अभी अभी, तो ये उनकी सारी अचीवमेंट्स हैं चीफ जिमी एवंस की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, माशाल्लाह इन्होंने जो है कुरान मजीद भी जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप देखें, मैं अपने देखने वालों को दिखाऊं माशाल्लाह से। तो ये सबसे ऊपर जो है इन्होंने रखा हुआ है एक रिस्पेक्ट, क्योंकि ये हालांकि ये क्रिश्चियन है लेकिन फिर भी इन्होंने मुस्लिम की किताब है हमारी, तो इन्होंने इसलिए सबसे ऊपर आउट ऑफ रिस्पेक्ट रखी हुई है। तो ये इनका है। तो आइए अब आपको कांस्टेबल के ऑफिस लेके चलते हैं। ये है कांस्टेबल नबील शाइक का ऑफिस। और अच्छा, तो अभी हम नबील भाई के बारे में आपको एक चीज़ में और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ। नबील शाइक जो हैं वो अमेरिका के फर्स्ट मुस्लिम कांस्टेबल हैं। तो अभी चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया, मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। नबील भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको एज अ मुस्लिम फर्स्ट जो कांस्टेबल हैं, कैसा आपको फील आता है? Oh man, that's a great question. It's very heavy, being the first of anything is always something that you have to carry on your shoulders a lot. So although I represent 250,000 residents in precinct 3, I represent 1.7 billion Muslims around the world. Being the first Muslim elected as constable comes with a lot of responsibility. जर्नी कब स्टार्ट की और कब आप पुलिस ऑफिसर बने, और उसके बाद किस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप कितना आपको टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? बचपन पर मुझे पुलिस को पसंद भी नहीं था. I hated police officers, just watching and seeing the stuff that they did. And then I had a situation when I was in high school, and it was a Precinct 5 Harris County deputy constable that came and, I guess showed me a better side to life. And when I got married, I was working in the oil and gas, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा था, and decided that I wanted to do a little bit more. I had just had my first daughter, and I wanted something to get involved in something to keep her safe. So I got into law enforcement 2012 में मैं academy में गया, and started working in Harris County as a deputy constable, promoted up to the rank of sergeant.
and just focused on training and education. And alhamdulillah, I've been able to graduate law school, and the only sitting constable that's also a lawyer in Fort Bend County. So alhamdulillah, the journey has been one that it's had its ups and downs, it's had its roadblocks, but alhamdulillah, we're here and we're here to stay. मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से आपको किन किन डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा? Again, sabse pehle Musliman constable elected in the entire country comes with a lot of responsibility. You have to learn to be excellent every single day. Being Pakistani, being Muslim, being 35 years old, comes with a lot of challenges. And we're constantly having to show everybody, hamara leadership style kya hai, the things that we're trying to do to better the community. So it comes with all the challenges. कांस्टेबल ऑफिस और शेरिफ ऑफिस में क्या फर्क होता है? क्या दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? दोनों अलग-अलग होते हैं. Very first law enforcement department in Texas is the constables. Then the sheriff was created. जो primary duty sheriff का है वो जेल का होता है. जो constable का होता है ये सारा आपका जो civil process and all the stuff that you're doing on the civil side, right? So if you're going to be sued, you have the stuff that's dealing with the courts. That's the main objective of the constable. The main objective of the sheriff is जब लोग गिरफ्तार होते हैं and we have to take him to jail, you have to take him to the county jail. वो sheriff jail पे होता है, right? Everything else is identical. ये आपके जो स्टार्स हैं इनका क्या मतलब होता है? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा. जी तो अब मेरा पास 4 स्टार्स हैं ना, तो मैं इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ. तो I'm actually the highest ranking Muslim police officer in the country. I'm the only I guess you can say 4-star police officer in the country that is Muslim, and alhamdulillah we're getting more and more to come, but that's pretty much, it's just a rank structure, right? So you may have, with agar kuch bhi nahi hai, then that just lets you know wo deputy hai na, first level. अगर यहाँ पर 2 stripes होता है, that means that they're a corporal. अगर 3 stripes होता है, इसका मतलब है वो sergeant है. फिर यहाँ ऊपर आके अगर 1 बार होता है, that means they're a lieutenant. अगर 2 बार होता है, then that means वो captain है. And then the stars start. So मेरा chief इसका पास 3 star है ना, वो मेरा chief deputy है. और मैं constable हूँ तो मेरा पास 4 star होगा. 2020 में जब इलेक्ट हुए, ठीक है, कांस्टेबल, उसके बाद आपने क्या चेंजेस जो है वो की थी? Yeah, great question. सबसे पहले हमने diverse command staff को लेके आए, right? We had to, precinct 3 was predominantly one particular race of officers, right? Precinct 3 के अंदर ये हमारा, this is the most diverse precinct in the county, the most diverse precinct in the nation. We have 44% of our population that is South Asian. And so one of the first things that I did was diversify our command staff. So I brought in, there was no Muslims working at the time in Fort Bend. Alhamdulillah, I was able to bring in Muslims. I was able to bring in Pakistani police officers. So that was the first thing that we did here. जो uniform जो आप देख रहे हैं ना, हमारे uniforms, हमारे गाड़ियाँ, I created what's known as a civilian review board. And the citizens of Precinct 3 designed these uniforms that you see today, right? Something very different. Hamara jo police agency tha, hum 24/7 nahi the, you know, they used to shut down at around 10 o'clock because you have the sheriff. Jab main aaya hu is position mein, we made sure that we're 24 hours a day, 7 days a week. Jab COVID hoya tha, we had whether we were donating food, water, personal protection equipment. You go back to the winter freeze, right, which was the first big challenge that I had because of all the ice on the roads. And constable का seat वो 4 साल के लिए होता है, तो मैं 2020 में लड़ा हूँ, और 2021 January 1st को I took the oath of office, and the term lasts till December 31st 2024. Okay. फिर आप जीतने के बाद इंशाल्लाह then I come into a second term, है ना, 4 साल और के लिए. और कांस्टेबल होने के साथ साथ आपने लॉयर भी जो है वो आपने डिग्री ली है, ठीक है, तो उसके हवाले से किस तरह मैनेज करते हैं ये सब कुछ? To know the law even better than what I already did, and so that was one of the big pushes on why I went to law school. It was very challenging,
going to school full time and being the constable, having to come to the office and do all the work as the constable, and then go to school for 2.5 years to complete the law school. और अब मैं बार के लिए study कर रहा हूँ, and it's a lot of work, but I do it for our community. कांस्टेबल नबील शाइक, आपकी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो क्या है? ये बहुत अच्छा question है. Everybody wants to talk about their strengths. I'll start with my weakness first. And one of my weaknesses is I'm too kind. I think I see kindness and love in everybody that I meet, and I want to bring that kindness and love out of them. And sometimes I get burned doing it. You learn in this position that आप सबको help नहीं कर सकते. And my problem is I want to be able to help everybody. And you have to learn the hard way through disappointment that you just can't help everybody. Some people don't want the help, So I think that's one of my biggest weaknesses. One of my greatest strengths, I think, is also I'm very kind. And I look at, it doesn't matter if it's somebody that's a janitor or if it's a billionaire, I'm going to treat them the exact same way. There is no difference. As a Muslim, we're taught to follow our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to do so you can't hate anybody. You have to show love. You have to show kindness. नबील भाई, आप भी मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो कांस्टेबल होता है, ठीक है, वो सबसे लो लेवल पे होता है. यहाँ पे अमेरिका के अंदर उसका क्या लेवल होता है? कांस्टेबल्स जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं जिनको नहीं पता, वो कांस्टेबल सुन के जो बोलेंगे या तो कांस्टेबल है बिल्कुल लो लेवल पे, हवलदार आप कह लें जिसे पाकिस्तान में होता है, तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर उसका क्या लेवल होता है कांस्टेबल का? Yes, again, ये भी बहुत अच्छा question है. Constables are very different depending on the state. And on Texas के अंदर constables are very, very powerful. हम सबसे ऊपर होते हैं ना sheriff के साथ. We're written in the Texas Constitution. The sheriff is mentioned, the constable is mentioned. We have an immense amount of power, both civil का authority है और criminal का authority भी है ना. So we have both the criminal side and the civil side that we do, where everybody else, all the other police agencies, only have criminal, right? Pakistan में the constables, you might see them on the side of the road, लोगों को रोक रहे हैं और वो पैसे ले रहे हैं लोगों से. जी जी. मतलब यहाँ पर ऐसे सिस्टम नहीं होता. यहाँ पर अगर एक मेरा डेप्यूटीज आपको रोकता है और आपको टिकट देता है, फिर आपको कोर्ट पे आना पड़ता है और कोर्ट के अंदर फिर आपको फीस देने पड़ता है या आपको वकील लेना पड़ता है and fight your case, right? But we're just not limited on traffic side. We also have, अगर किसी ने किसी को मारा है ना, and you have an assault, we also investigate those. And then अगर आपका अगर आपने रेंट को घर पे किराए पे डाला है ना, you have your house on rent, and इसने पेमेंट नहीं दिया, then you have to come to the constable और हम सारा वो eviction process कराते हैं ना कोर्ट के साथ और फिर हम जाके इसको निकालते हैं. Right, so it's a lot of difference depending on the state. Texas के अंदर ये ऐसा होता है. कहीं और state के अंदर, well, the constables are not as big, but Texas के अंदर the constables and the sheriff are the real deal. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एज अ पुलिस कांस्टेबल आप क्या दूसरे पुलिस वाले को रोक सकते हैं अगर वो गलत ड्राइविंग कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है क्राइम? Anybody, हम प्रेसिडेंट को भी रोक सकते हैं. ठीक. अच्छा, तो अगर प्रेसिडेंट बाइडेन भी चला रहा है, अच्छा, कोई भी लॉ यहाँ पे तोड़ता है, वो डजंट मैटर, जज है, पुलिस ऑफिसर है, कोई भी है, doesn't matter. और अगर मैं भी तोड़ता हूँ, and my staff can stop me. सही सही. ठीक. तो देखा आपने यहाँ पे अमेरिका का लॉ, अमेरिका का कानून कितना जो है वो स्ट्रिक्ट है, किसी को कोई माफ़ी नहीं है, भले वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो. Operation Margo, this is a multi-agency reinforcement gang operation, right, where we were really going after the gang members in Fort Bend. मैंने आने से पहले जो previous constable था और जो previous sheriff था, इन लोगों ने बोला हमारा gang का problem नहीं है यहाँ पर. But when the new sheriff came in, maybe I own district attorney के साथ, we found out very quickly that there is a gang problem. So we started putting operations together just like Operation Margo. This was a partnership with the Fort Bend County District Attorney of Fort Bend County. और यहाँ पर the black lines ये हमारे precinct 3 के अंदर आता है ना.
So this is actually precinct 3. ये जो map है, हम्म। this is the blown up map of only precinct 3. यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ी होती है अमेरिका के अंदर वो किस तरह की होती है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, ये पिछला हिस्सा जो है वो क्रिमिनल के लिए है। ये जो है लग्जरी गाड़ियाँ हैं ये। चलो ये देखें, यहाँ की गाड़ियों के अंदर जो है पुलिस वालों को बाकायदा एक पूरा लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो दिया जाता है। अच्छा नबील भाई, ये आपने थोड़ा यूनिफॉर्म के बारे में बताएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ। हाँ हाँ। तो ये हमारा डिपार्टमेंट इशू टेजर होता है। सो दिस इज an intermediate weapon, right? So if somebody is, you're trying to gain compliance और वो आपका बात नहीं सुन रहे, so then what you do is you fire the taser at them to try to gain compliance as an intermediate level of force. And you don't want to get tased. It hurts very bad. We all have to go through the training and get tased ourselves. But that's what the taser is for, right? And then also on this side, I have my 2 magazines. These are the magazines for my gun. This is where my flashlight goes, which I don't have on me right now because we're in the daytime. I carry 2 handcuffs on me at all times. And then as we shift to this side, this is my Glock 22, which is our lethal force. This is what you'll use to stop the threat completely. It's the last line of defense that we will use. I've been in a shooting before, so I know exactly how it feels to be shot at point blank range. And alhamdulillah, this is थैंक यू it. सो मच नबील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा, आज मैं कांस्टेबल ऑफिस के अंदर आया और यहाँ पे जो है मैंने उसको कवर किया और नबील शाइक से जो है आपकी बातचीत करवाई और इन्फॉर्मेशन ली उनसे। मेरे देखने वाले हैं, अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।